वेलकम टू बीकेस ट्यूटोरियल। तो आज आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कोर पेपर 2 रही से जो फर्स्ट यूनिटा अच्छी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज आम डिस्कसन करवा। तो यहाँ मो नोट्स वाइज तुम क्लास टा भी नोट वाइज है। तो 1934 the idea of the Constituent Assembly was for India was put forward for the first time by Amir Roy, a pioneer of communist movement in India. Then 1934 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରବାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମ୍ ଆଇ ରୟଟା କହିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଏମ୍ ଆଇ ରୟ ଥିଲେ पिनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट है जो भारत कम्युनिस्ट मूवमेंट था से मुख्य थे। 1935 the Indian National Congress sort of INC for the first time officially demand for a constituent assembly to frame the constitution of India। 1935 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन भारत रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो। 1938 नेहरू डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम। नेहरू डिक्लेयर कले कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कौन सी बाहर बिना चापर है इंटरफेरेंस रे by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise ना constituent assembly टा इलेक्ट हुआ ये कहा द्वारा adult franchise। 1940 अगस्त पर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट 1940 मध्य अगस्त पर आसाला से डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड के एक्सेप्ट कर। 1942 सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एक मेंबर ऑफ कैबिनेट है कैबिनेट मिशन से मेंबर थे सर स्टाफोर्ड क्रिप्स came into India with a draft proposal of the British government on the framing of an independence constitution to be adopted after World War II। से प्रपोजल के रिजेक्ट कर ना मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देला। 1946 मसीह 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेट बाय कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा कॉन्स्टिट्यूट होला केबे ना नवंबर 1946। The Constituent Assembly was to be a partly elected and partly nominated body। Constituent Assembly टा गोटे partly elected मध्य है एवं partly nominated मध्य आते। Moreover, the members were to be indirectly elected by the member of provincial assembly। Member were indirectly elected indirectly जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर प्रोविजनली प्रोविजनली असेंबली रे इलेक्टेड होंती themselves were elected on a limited franchise द्वारा इलेक्ट होती। इड़ा आसीला यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 मसीह। Assembly comprised representatives of all sections of the Indian society: Hindu, Muslim, Sikh, Parish, Anglo-Indian, Indian Christian, atheists, including women of all these sections। December 1946
फास्ट मीटिंग ऑफ असेंबली है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट मीटिंग है केबे 9 डिसेंबर 1946 रे मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग मुस्लिम लीग से मीटिंग टा बायकॉटेड कर दिला है ना सच्चिदानंद सिन्हा द मेड टेम्पररी प्रेसिडेंट फ्रेंच प्रैक्टिस है ना से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले सच्चिदानंद सिन्हा 11 December 1946 Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly 11 December 1946 रे Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly ना similarly both S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya were elected as the vice president of the assembly ना S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamacharya vice president ले elected हेतुले 13 December 1946 Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution on December 13 December 1946 रे Jawaharlal Nehru गोटे हिस्टोरिक मूव करते सेटा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा मूव करते 22 जनवरी 1947 रिजोल्यूशन टा अडॉप्ट हेतला जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा एटा 22 जनवरी 1947 रे अडॉप्ट हेतला देन 3 जून 1947 रे माउंटबेटन प्लान हेतला माउंटबेटन प्लान हेतला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिया केवे इंडिपेंडेंस ना 1947 से टाइम रे असेंबली वाज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी है ना असेंबली टा गोटे सोवरेन बॉडी हिसाब मेड होला असेंबली आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी है ना असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी मते थिला द असेंबली बिकेम ए फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया असेंबली गोटे फर्स्ट पार्लियामेंट थिला जिने फ्री इंडिया then whenever the assembly met as the constituent body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad and when it met as the legislative body it was chaired by G.B. Mavlankar. These two functions continued till November 26, 1949. Constituent Assembly also performed the following functions. First, it ratified India's membership of the Commonwealth in May 1949. Second, it adopted the national flag on July 22, 1947. Then it adopted the national anthem on January 24, 1950. Fourth, it adopted the national song on January 24, 1950. Then fifth, it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. Then the constitution was adopted on November 26, 1949. Constitution adopted like 19 November 26, 1949. Contain a preamble, 22 parts. Contain a preamble, 22 parts, 395 articles and 8 schedules. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. Then major committee. Next देखो हमें major committee है ना. First तो drafting committee B.R. Ambedkar chairman थे. Then steering committee रो chairman थे
Randhir Prasad, Union Power Committee, Jawaharlal Nehru, Union Constitution Committee, Jawaharlal Nehru, Provincial Constitution Committee, Sardar Patel, है ना। फर्स्ट हमें देखो ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना। ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप on August 29, 1947 and drafting committee set up होता केबे ना August 29, 1947. It consists of 7 members. They were drafting committee रा 7 members थिले ସେମାନେ କିନ୍ତୁ Dr. B.R. Ambedkar chairman, B.R. Ambedkar and Gopal Swami Iyengar. थर्ड 3 रे आलादी कृष्णा स्वामी आया चेयर डॉक्टर केम मुंशी 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला 6 रे एन माधवराव he replaced B.L. Mittal who resigned due to ill health and माधवराव ता कहा बदल रहा है B.L. Mittal ଯାହାଙ୍କ କି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଏନ୍ ମାଧବରାଓଟା ଆସିଥିଲେ ଟିଟି କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ହେଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଥିଲେ କାହା ସ୍ଥାନରେ କାହା ଜାଗାରେ ନା ଡିପି ଖୈତାନ who died in 1948 ଡିପି ଖୈତାନ 1947 ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଟିଟି କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବରଟା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। Thank you for visiting BKS tutorial club. क्लासटा ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ।